Hey guys, this is Sal and welcome to this super exclusive episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम इलेक्शन स्पेशल स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम इलेक्शन के टाइम, बिकॉज ऑनेस्टली देखा जाए तो कल हमारा फेज 1 हो चुका है और आने वाले और भी 6 फेजेस हैं एंड देन वी आर गोइंग टू हैव दिस वन इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह भी होगा। ऑल्दो इलेक्शन के टाइम पे स्ट्रैंगल वगैरह बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वन ऑफ माय ओन स्ट्रैटेजी विच आई लर्न फ्रॉम माय मेंटर्स, और उसी को मैंने थोड़ा सा ट्वीक करके खुद की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है, खुद की ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट किया है, एंड इवन दिस इज व्हाट आई हैव टॉट टू माय community members as well. So if you're someone who is new to our YouTube channel and even on our Facebook page, welcome to our channel and our page. और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस में जो है आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं provided you have invested your time and efforts into your journey. आपने कैश के साथ स्टार्ट किया है एंड देन नाउ यू हैव जंप्ड इनटू ऑप्शंस। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दैट यू हैव जस्ट नाउ स्टार्टेड योर ट्रेडिंग जर्नी एंड देन आप स्ट्रेट अवे ऑप्शंस में जा रहे हो, बिकॉज यू आल्सो हैव टू बी get prepared in terms of your mindset, in terms of your psychology. So I would like to urge and request कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अभी शुरू कर रहे हो, so don't go for futures and options right away, go for cash and then जैसे जैसे आपका confidence build up हो जाए, then you can jump into options as well and then you can jump into futures. And first of all, let me share with you the proof that जो मैं स्ट्रैटेजी भी शेयर करने वाला हूँ वही सेम स्ट्रैटेजी यूज करके, बिकॉज राइट नाउ दिस इज द वीडियो विच इज गोइंग टू बी पोस्टेड ऑन 20th ऑफ अप्रैल, और इवन मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन में ही। सो दिस इज माय ओवरऑल पीएनएल फॉर दिस मंथ। एक ही दिन लॉस हुआ था, इवन उस टाइम पे मेरी काफी बड़ी मिस्टेक हो चुकी थी, अदरवाइज दोनों ही अकाउंट में इतना लॉस ना होता, ब्रेक इवन में ही वो ट्रेड निकल जाता, बट अल्टीमेटली दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। बट जो मेरा इंटेंशन है, इट्स नॉट समथिंग कि मुझे किसी को शो ऑफ करना है एंड सो ऑन। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि यार ये स्ट्रैटेजी मैं खुद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ एंड देन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये दोनों ही अकाउंट में है, यू कैन सी द रियलाइज्ड पीएनएल, वरना किसी को लगेगा कि यार दो लाइक एक ही अकाउंट का डबल स्नैपशॉट लगा है। दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो रियलाइज्ड एंड नेट रियलाइज्ड पीएनएल दोनों ही थोड़े थोड़े अलग है, बिकॉज एक अकाउंट में कुछ 200-300-400 रुपए का डिफरेंस था ट्रेड में, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, स्ट्राइक प्राइस सेम, बाइंग प्राइस सेम, सेलिंग प्राइस सेम। बस एक जो ट्रेड था उसमें थोड़ा सेलिंग प्राइस एक अकाउंट में थोड़ा ज्यादा हो गया था, सो दैट्स व्हाई द अमाउंट इज हायर, बट रेस्ट ऑल द थिंग्स आर गुड। बट लेट्स जंप इनटू एक्सपायरी लेवल 1। और एक्सपायरी लेवल 1 इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक्सपायरी के वक्त काम करती है, दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। ये स्ट्रैटेजी कब भी वर्क कर सकती है, इट कुड बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, any of the days, irrespective whether it is Nifty, Bank Nifty, Mid Cap 50, Bank X, Sensex, या फिर Fin Nifty, या even there are a lot of indices which are going to come up in terms of options. तो ये strategy किसी भी index पे work कर सकती है, provided you are learning it properly and provided you are backtesting it enough. So let's jump into the overall rules. और honestly speaking ये strategy का video है, so I would like to request to all of you that please watch this particular video multiple times, because strategy जो होता है उसको बार बार rewind pause करके देखना पड़ता है, so make sure you do that as well. So first of all rules समझ लेते हैं, बहुत ही basic rules हैं। example लेते हैं, बैंक निफ्टी का current market price है CMP means current market price, let's assume बैंक निफ्टी अभी 46,000 पे है, so at that instance of time हमें बैंक निफ्टी का futures chart को track करना है एंड देन हमें एट द मनी कॉल ऑप्शन चार्ट को भी ट्रैक करना है। सो इट कुड बी, लेट्स अज्यूम अगर हमारा पर्सपेक्टिव बुलिश है, बिकॉज राइट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बुलिश पर्सपेक्टिव इटसेल्फ। अगले वीडियो में जो होगा टेक्निकल सैटरडेज के, इसमें हम लोग बेरिश पर्सपेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी हैव टू गो फॉर एट द मनी कॉल ऑप्शन। इट कुड बी like 46,000 CE or it could be 46,100 as well। 100-200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे चल जाता है, ज्यादा बाहर का मत लीजिए, बिकॉज इट कुड बी लाइक थोड़ा सा समटाइम्स इट्स लाइक मूवमेंट का भी इशू आ जाता है। इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय ओन ट्रेडिंग जर्नी कि कभी कभी बैंक निफ्टी ऊपर जाता है बट जो कॉल ऑप्शन है वो वहीं का वहीं रह जाता है या फिर वो नीचे आ जाता है। सो टू अवॉइड दोस पर्टिकुलर एरर्स, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू गो फॉर एट द मनी कॉल ऑप्शन। 100-200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे चल सकता है and that's what it is, and time frame में हमें 15 minutes लगाना है, and this is for the initial phase. If you're someone who is absolutely new to your trading journey, I would like to request you go for 15 minutes time frame। जैसे जैसे आप इसके साथ कंसिस्टेंट होते जाते हो, you can also change it to 5 minutes, because वहां पे आपको और ट्रेड करने के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बट एज ऑफ नाउ
गो फॉर 15 मिनट्स बिकॉज ये मैंने खुद अपने मेंटर से सीखा एंड इवन आई थिंक आई हैव रेड इन वन ऑफ द बुक्स दैट जब भी हम लोग ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम बढ़ाते जाते हैं रूम ऑफ एरर कम होते जाता है. लाइक अगर आप 1 मिनट के चार्ट में जाओगे तो बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन होते हैं. 5 मिनट में जाओगे तो बहुत कम होते हैं. 15 मिनट्स में और भी कम होते हैं. देन कम्स आवरली, देन कम्स डेली. तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे रूम ऑफ एरर कम होता जाएगा एंड दैट्स व्हाट आई वांट कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जो एरर्स हैं उसको अवॉइड करते चलो बिकॉज दिस इज द बिजनेस जहां पे देयर इज नो स्पेस फॉर एरर्स. अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी यू आर गॉन. समटाइम्स इट्स लाइक आपका पूरा ट्रेड लॉस में जा सकता है. समटाइम्स इट कुड बी लाइक आपका पूरा ट्रेडिंग कैपिटल ही वाइप आउट हो सकता है. और मैंने खुद बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस करते हुए देखा है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप टाइम फ्रेम 15 मिनट्स रखें बिकॉज दैट्स व्हाट द ओवरऑल रूल्स आर ऑल अबाउट. एंड देन कम्स एंटर ऑन अलर्ट कैंडल. अभी अलर्ट कैंडल क्या होता है इसको भी थोड़े सेकंड्स में हम समझेंगे. सो देन कम्स पहले फ्यूचर चार्ट में हम लोग आरएसआई को फॉलो करते हैं. सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ आरएसआई 60 ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम उसी सेम टाइम पे एट द मनी कॉल ऑप्शन भी आरएसआई 60 का ब्रेकआउट कर रहा होगा. सो एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम वी हैव टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर ट्रेड. अब कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके भी रूल्स मैं बता देता हूँ. द अलर्ट कैंडल रूल्स जो मैंने बताया कि हमें अलर्ट कैंडल पे एंटर करना है. So we have to buy above the alert candle. We have to keep the stop loss below the alert candle. And हमारा जो target 1 होगा that will be the size of the alert bar. Target 2 will be size of the alert bar 2 and then comes target 3 which will be size of the alert bar 3. So ये as of now है. And then comes bonus which is pyramid at RSI 60 support. ये थोड़ा सा advanced concept है. But in terms of picture wise, let me make you understand कि जब भी at the money call option में हमने देखा like जब futures का chart 60 का breakout कर रहा है at that same instance of time at the money call option भी RSI 60 का breakout कर रहा है which means now from being into a sideways zone it is getting converted into an uptrend. तो जब वो breakout कर रहा है वो जो exact green candle बन रही है you don't have to go for red candle you have to go for green candle. तो जब वो green candle बन रही है RSI 60 का breakout हो रहा है at that candle you have to enter. And if you're someone who is starting off your journey I would like to mention कि जब वो candle close होता है तब आप एंट्री लीजिए. एंड वंस यू गो इनटू योर इंटरमीडिएट स्टेज तब आप वो कैंडल जब बन रहा होता है तब भी एंटर कर सकते हो. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द कैंडल टू गेट क्लोज्ड. राइट. सो वंस इट ब्रेक्स आउट तो वहां पे जो कैंडल बनता है दैट इज व्हाट वी कॉल एज अलर्ट कैंडल और अलर्ट बार व्हाटएवर यू कॉल. तो वो सिग्नल होता है कि यार यहाँ पे हम लोग एंटर कर सकते हैं. एंड देन वी हैव टू बाय अबव द अलर्ट कैंडल. द इनिशियल स्टॉप लॉस विल बी बिलो द अलर्ट कैंडल एंड देन वी हैव टू एस्पायर फॉर दिस वन. अलर्ट बार का जो साइज है लेट्स अज्यूम जो अलर्ट बार का साइज है विच इज 50 रुपीज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल. तो हमारा टारगेट 1 होगा 50 रुपीज. देन कम्स 100 देन 150 एंड सो ऑन. तो ओवरऑल 50 50 50 का एक टारगेट होगा. सो दैट्स व्हाट द ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट. और मैंने बोनस भी बताया दैट वी कैन पिरामिड एट RSI 60 सपोर्ट. सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो RSI 60 का सपोर्ट बना है फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया. बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ तो वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है फॉर एनी ऑफ द ऑप्शन टू टेक 60 सपोर्ट. और वहां पे भी अगर बुलिश कंफर्मेशन आ रहा है देन ओनली वी हैव टू this one we have to pyramid and so on. Right. So these are the basic rules. And जैसे कि मैंने बताया whenever you are starting off your journey you have to go with 15 minutes and then as and when you go into intermediate stage and so on then you can also go for 5 minutes sharp. And similarly when you are starting off your journey go with this one. जो alert candle होता है उसका closing पे आप enter कीजिए. But as and when you go with the flow आप back testing अच्छे से कर रहे हो आपने properly फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन किया है आपका प्रॉपरली जो है आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस स्ट्रैटेजी का देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर एंट्री एट द अलर्ट कैंडल इटसेल्फ. यू डोंट हैव टू वेट फॉर द कैंडल टू गेट क्लोज्ड एंड दैट्स व्हाट दैट ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट. तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल्स है काफी पुराने हैं बिकॉज द सेम प्रेजेंटेशन वाज यूज्ड बाय मी व्हाइल आई वाज डिलीवरिंग अ सेशन इन आवर कम्युनिटी. तो यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट है एज यू कैन सी वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ 60. लेफ्ट साइड में फ्यूचर्स का चार्ट है राइट साइड में एट द मनी कॉल ऑप्शन का चार्ट है. एंड जैसे ही कैंडल का ब्रेकआउट हुआ एट द सेम इंस्टेंस ऑफ टाइम कॉल ऑप्शन का भी ब्रेकआउट हुआ एंड देन एट दैट सेम अलर्ट कैंडल वी हैव टू एंटर above the alert candle and then the stop loss will be below the alert candle and then we have to aspire for the target one will be जो हमारा रिस्क है that will be 1:1. let's assume 50 रुपए का रिस्क है तो हमारा रिवॉर्ड जो है हम एस्पायर कर सकते हैं इनिशियली दैट विल बी 50 रुपीज. देन जैसे जैसे हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाता है देन वी कैन एस्पायर फॉर 100 रुपीज देन 150 रुपीज एंड सो ऑन. एंड इवन इवेंचुअली एज एंड व्हेन यू मूव फॉरवर्ड विद योर ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नी पहले आप एक लॉट से शुरू करो देन यू कैन गो टू
2 lots, then 3, 4 and so on. Don't straight away jump from 1 lot till 5, then 10, 20 and so on. धीरे धीरे करके start कीजिए, market कहीं भागे नहीं जा रहा है, and every single day you are going to get one or the other opportunities, and it's not something कि ये जो strategy है, this is just going to get applied on index itself. ये stocks में भी apply होता है, but वहां पे थोड़ा सा risk reward ratio different हो जाता है, right? So that's what this overall thing is all about. And एक और rule which I would like to mention here, that as and when, let's assume अगर call option जिस पे हम buy कर रहे हैं वो कैंडल काफी बड़ा है, so what you have to do is you don't have to go for the overall alert bar as, let's assume जहां पे हम एंटर कर रहे हैं उसका लो हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है. लेट्स अज्यूम अगर कैंडल बड़ा है तो हमें हाफ ऑफ दैट कैंडल as a stop loss रखना है, so that our risk reward ratio matches. So that's what the overall thing is all about. Then comes one more example here. यहाँ पे हमें एक opportunity मिली in order to go for call option, at the money call option. Then again यहाँ पे 60 का support लिया, and then again यहाँ पे हम pyramid कर सकते थे, and then from let's assume 1010 अगर round figure consider करें तो 1010 से लेके 1070 तक का movement हमें देखने को मिला. And in terms of options it went from 10 rupees and it even went beyond 50, 55 rupees and so on. So that's the power of options. And yeah, again one more example. यहाँ पे 15 minutes time frame पे 60 का breakout कर रहा है. Again at that same instance of time, options में भी at the money call option में 60 का breakout कर रहा है. And from that instance of time, if you notice, जहाँ पे हमने candle पे enter किया था वो कैंडल तो छोटा था, बट जो हमें एज ए रिवॉर्ड मिला है वो कैंडल्स काफी बड़े हैं. एंड दैट्स व्हाट दिस ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट. एंड अल्टीमेटली एज एंड व्हेन यू आल्सो मूव फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने अभी तो बताया है कि लाइक एक दो कैंडल्स में ही आपको एग्जिट कर देना है. दिस इज फॉर द इनिशियल फेज. एज एंड व्हेन यू गो इनटू इंटरमीडिएट स्टेज यू कैन कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस, एंड दैट्स व्हाट द ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट, राइट? अगेन वन मोर एग्जांपल हियर. 60 का ब्रेकआउट हो चुका है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एट द मनी कॉल ऑप्शन में 60 का ब्रेकआउट हुआ है. एंड वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू मेंशन हियर, दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम जोन. यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार आपको सुबह 9:15 बजे बैठना है या फिर आपको दोपहर को 3 बजे बैठना है. ये स्ट्रेटजी कब भी अप्लाई हो सकती है, प्रोवाइडेड 60 का ब्रेकआउट हो रहा है. एंड इट कुड बी जोन 1, जोन 2, जोन 3. आपको 11 बजे ब्रेकआउट मिल सकता है, 12 बजे ब्रेकआउट मिल सकता है, 1 बजे ब्रेकआउट मिल सकता है, कितने बजे भी ब्रेकआउट मिल सकता है. एंड दैट्स व्हाट द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यार पहले आधे घंटे में ही आपको स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, या फिर लेट्स अज्यूम जोन 2 में ही अप्लाई करना है या जोन 3 में. समटाइम्स यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इन जोन 3, समटाइम्स इन जोन 2, समटाइम्स इन जोन 1, एंड समटाइम्स लाइक पूरे दिन में आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, right? So that's what this overall thing is all about, and I hope that you are absolutely clear with this overall strategy. And I know थोड़ा सा lengthy video था, but I would like to mention that please do make sure that you watch this particular video once again. मैंने काफी सारे nuggets share किए हैं that if you are someone who is starting off your journey, go with 15 minutes time frame. जब आप intermediate stage में पहुंच जाओ, आप 15 minutes की जगह 5 minutes में भी जा सकते हो, but the rules will remain the same. Alert bar पे entry करना है, target 1 will be 1:1, target 2 will be 1:2, and target 3 will be 1:3, and so on. अगर आप चाहो initial stage में आप सिर्फ target wise रख सकते हो. इंटरमीडिएट स्टेज में या फिर जैसे आप प्रो ट्रेडर की जर्नी में चले जाओ, देन यू कैन कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस रादर देन बुकिंग योर प्रॉफिट्स एंड सो ऑन. इनिशियली आपको एक लॉट से शुरू करना है, देन गोइंग फॉरवर्ड आपको एक एक करके लॉट्स इंक्रीज करने हैं. एक साथ जंप नहीं करना है कि एक लॉट देन 5 लॉट्स 10 20 एंड सो ऑन. धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, मार्केट कहीं भागे नहीं जा रहा है. एंड दैट्स व्हाट इट इज. अगर अलर्ट बार बड़ा है तो यू हैव टू गो फॉर हाफ ऑफ दैट अलर्ट कैंडल एज अ स्टॉप लॉस, एंड अगर अलर्ट बार छोटा है then definitely alert bars low will be your stop loss and so on. And again one more thing which I shared, कि जब आप intermediate जब आप normal stage में हो, जब आप initial stage में हो, तब आपको alert bar का close होने का wait करना है in order to enter the trade. But when you are in the intermediate stage you can definitely enter at the alert bar itself. Definitely जब आप enter कर रहे हो, sometimes it will be like वो 60 breakout की जगह पे अगेन वो 60 का रेजिस्टेंस ले जाए, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए. बट अगेन इंटरमीडिएट स्टेज में इट्स लाइक योर माइंडसेट इज आल्सो प्रिपेयर्ड, यू आर आल्सो प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट एंड मेनी अदर थिंग्स. सो दैट्स द डिफरेंस एज वेल. But definitely this strategy will work out, and the strategy will also help you out in order to make money through trading. Because ये चीज मैंने मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी that in trading in terms of NSE and BSE in terms of options and so on, मार्केट में रोज समथिंग $64 बिलियन का कुछ टर्नओवर होता है.
and $64 billion or rupees, I'm not 100% sure about this, but if we are not able to take at least 2,000 to 5,000 to 10,000 per day out of that money, then it's not gonna make sense, right? So that's what I would like to mention here, that initially छोटे छोटे profits होते रहेंगे, but be consistent on that. And honestly, at this instance of time जो मैंने अपना ये शेयर किया है, P&L वगैरह भी शेयर किया है, I would like to thank God, I would like to thank my mentors, I would like to thank my family members and everybody around me who supported for this journey, because उनके अलावा ये ना हो पाता, and even without my mentors this would not have happened, and मैं खुद भी घिस रहा होता, मैं खुद profit loss वाली journey में होता, ना कि one sided profit and so on. So again, I would like to thank to everybody, and please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and उसी के साथ please do make sure that you follow us on Facebook page as well, because ये जो strategy थी मैंने call side में बताया है, when the market is bullish, but when the market is bearish in terms of like intraday time frames and so on, तो उसमें क्या करना है वो हम अगले हफ्ते में डिस्कस करेंगे. And even if you're someone who is new to our YouTube channel, और अगर आपको नहीं पता है कि what is RSI, what is price action and so on, then you can jump out into our Technical Saturday series and RSI Mastery series, and दोनों से ही आपकी काफी मदद हो जाएगी. आपको कोई पेड कोर्सेज या पेड प्रोग्राम में जाने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी. You can straight away kickstart your journey initially through that particular video series itself, and I look forward to see you tomorrow in weekly mastermind, जहां पे हम ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करेंगे. एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट यू शेयर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑफ योर्स जो कि ट्रेडिंग जर्नी में है और वो भी लॉसेज इनकर कर रहे हैं या फिर वो ज्यादा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड दे कैन ऑल्सो स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट ऑन देयर ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी. So that would be my request to all of you, and I look forward to see you tomorrow and in upcoming videos. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.